Hi everyone, good evening. Hello, sir. Good evening, sir. Hello, good evening. Just give me a moment. Okay, let me share my screen. Meanwhile, others join. So hope my screen is visible to everyone. Can anyone please confirm? Yes, it's visible. Okay. Okay, I think we are good to start. So guys, we are going to continue with the Azure 104. This is going to be the first class, right? Where we are going to discuss about the basic things, the basic prerequisites in order to start this module. ठीक है एंड आई थिंक यू ऑल आर अवेयर दैट इज ये बैच जो है ये हिंदी बैच रहने वाला है राइट दिस इज गोइंग टू बी इन हिंदी सो if anyone want to join the English batch, so in that case you can connect with the team and they will guide you with the English batch also. Okay, so in last class we have discussed about what and all topics that we are going to cover under Azure 104. Okay, so if anyone was not there, so in that case I can just help you again with the topics that we are going to discuss. Just a second. Yeah, so first of all we are going to strictly follow the syllabus that is provided by the Microsoft, right? We are going to cover the syllabus which is provided by the Microsoft. Okay, or actual scenario how companies works on these topics, like it can be storage or it can be any your Azure Active Directory, right? Then the virtual machine. So we are going to work on the real-time scenarios, right? So if you're talking about me, I do have around 6.5 years of experience in IT, and from last 3 years I'm working on the cloud, right? And my major experience was on-premise, but now I'm working on cloud technology from last 3.5 years. Okay, and I'm Azure certified engineer. And apart from this, I used to train on the topic of SCCM and then MCSA, right? So these are my expertise on which I used to train the students, right? So topics, first of all, as I told you, either you can go to the Microsoft website, right? And what and all topics are available there, we are going to discuss it. We are going to strictly follow the syllabus that is provided by the Microsoft. ठीक है, और मैं ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देने वाला हूं. I am just going to help you with the practical scenarios.
Theory आप अपने आप खुद से पढ़ सकते हो, right? Now you are grown, right? And it is not needed to again let you know that you have to go through with this topic and all, right? You can do your self study. I can help you with the uh, links. I can help you with the PDF books and all. ठीक है, but self study आपको करना है. Practical, that is my responsibility, right? And even this session, this whole module is going to be interactive. You can unmute anytime, you can ask your doubt, and I'll try to resolve your issues during the classes itself, or even let's suppose if we are doing any practical, ठीक है, कोई भी practical कर रहे हैं हम लोग, at that time अगर आपको कुछ भी issues face हो रहे हैं, so on next class, first of all I'll take your queries, right? And then we can start the agenda for the day, right? So this is how we are going to move this module, and it is going to take around 1 month. Okay, and classes will be for 2 hours at 10 o'clock in the night, 10 o'clock IST. Right now, अच्छा, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन और डू यू हैव एनी क्वेरी? पहले से ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, सो यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. नो क्वेरी? नो सर. चलो, so let's start. Meanwhile आपको कुछ लगता है, so you can unmute yourself, you can type in the message, right? So then you can unmute yourself and I'll take your query. So I believe you all have one credit card. यस सर. Yes, sir. Okay, अब जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, right, they can sign up their account with the debit card also. But debit card में कई बार issues आते हैं, ठीक है? So what you need to do, अगर आपको कुछ issue आ रहा है during जब भी आप sign up कर रहे हो, उस time आपको issue आ रहा है, so what you can do, you can connect with the Microsoft team, right? So they will help you with the customized link. Let me show you how it will be like. आज मैं try कर रहा था, even I got the link also, but for that I need to access my email account. Just a second, guys. Okay, so it will be like this. You will get an email, they will create a customized link for your account, right? And then you can sign up onto the Azure portal so that you will be able to get the free credits in your account. Maybe you'll get around $200 in case you are signing up with the debit card also. But यहाँ पे एक limitation है that you can only use Visa और Master card. अगर आप डेबिट कार्ड से भी साइन अप करना चाहते हो, यू कैन डू इट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो वो कार्ड हो वो मास्टर कार्ड हो या फिर वीजा कार्ड हो, और उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हो वो अनेबल्ड हो. ठीक है, जब भी साइन अप करोगे दे आर गोइंग टू डिडक्ट ₹2 फ्रॉम योर अकाउंट, right? Or within 24 hours you will get back that ₹2 also in your account. That is just to identify your identity. That is just to make sure कि yes, you are authentic. Okay, I'm not saying every time you are going to face this issue while trying to sign up the account with the debit card, but if you are facing, in that case you can
raise a complaint with the Microsoft team, and they will help you with the customized link, and over there you can create your account with the debit card also. Even उनका जो representative होगा या फिर जो भी customer care होगा, he will call you also. If let's suppose during that time अगर आपको तब भी issue आ रहा है, so you have to provide your contact number, so that person will call you and he will help you out throughout the process. ठीक है, अब साइन अप कैसे करना है, अकाउंट बनाना कैसे है. Okay, first of all you will be needing any Microsoft account, right? या फिर Microsoft नहीं भी है, Gmail account भी चलेगा, no issues, उससे भी साइन अप हम कर सकते हैं. So let me help you out with this link itself. I'm going to open it in the incognito mode. Right? So if you have a Microsoft account, in that case you can sign in with that account itself. But if you do not have, then you have to create it. Create one. Right? So either you can use your Gmail account. You can see, either you can use your Gmail account, or you can use the Hotmail or your Outlook account also. Microsoft, you can create a new account on Microsoft. Okay, so let's suppose I'm going to select get a new email address. So in that case, you're saying that either I can create it with the Outlook domain, or I can create it with the hotmail.com. Depends on you how you want to create. Okay, so let's suppose I am going to create like trainer या फिर Azure trainer 1509, right? And then go next. See, it is not available, so I have to make some modification. Maybe it is taken by some other people. So what I can do, let me go with 1215. Let's see if it is available. Okay, it is also not. Let me cut this one and let's take AZ network and then 1509 and next. Yes, this is available. Okay, and now I can create a password for this account. Let's suppose I am going to give this account password, right? You can use anyone with जो आप उसको याद रख सकते हो, right? You have to give it and then go next. So it is going to ask some of the puzzles. Next. So ये आपको करना है, use the arrow to rotate the animal to face in the direction of the hand. Okay. Yes, it should be like this only, right? Yeah, it will be like this. Go submit. Yes, it is completed. And now it is going to redirect us to the Azure portal. See, right? And now I need to provide my first name, right? Let's suppose it is network gangs. Okay, let me take this one. Right, and this will be fine. And contact number I need to provide, right? So let's suppose I'm going to give, I need to take mine one. Okay, then it is going to verify whether the number you have provided, the contact details you have provided, whether it is fine or not. Okay, so now you have to select text me or call me option. Okay, then let's suppose I'm selecting text me. In that case, I'll get the verification on my
phone. Okay, and that code I need to enter here. Okay, so I got it. It is 968 and 543. Let's verify. Okay, so we are verified. Okay, then a PAN ID is optional. It is not recommended, or it is not mandatory to provide. But yes, once you are moving to pay as you go service, I will let you know what is pay as you go and all. So once you are going to pay as you go service, in that case you have to provide the PAN number. Okay, then address line, this is optional. This you can provide. Let's suppose it is Bangalore 202 and city Bangalore. Select it is Karnataka. Postal code, it is 560037 for me. And then I agree, and I would like to Microsoft share information, and then go next. Okay, organization also I need to give. So let's suppose I'm providing networkings, and then next. So this is the basic process that guys we have to go through with it, right? Then only we will be able to create our account. We will be able to use the services of the Azure. You can perform this along with me, right? Or at any point of time, if you're facing any issue, just do let me know. Okay, now I need to give my credit card or debit card information. You can see, please provide a credit card or debit card. See, no need to worry guys, if अगर आप यहाँ पे provide कर रहे हो अपना network कोई भी अपना debit card या credit card, so they will not going to charge anything until or unless you are not selecting the pay as you go service. तो जब तक आप उस सर्विस को ऑप्ट नहीं करोगे तब तक कोई डिडक्शन नहीं होगा आपके अकाउंट से. ओके, एंड ये करना जरूरी है. देन ओनली क्या होता है ना, हम दो टाइप से एज्योर को यूज कर सकते हैं. आइदर वी कैन यूज द फ्री ट्रायल और वी कैन गो विद द पे एज यू गो सर्विस. तो फ्री ट्रायल क्या कहता है, जब भी आप फ्री ट्रायल अकाउंट यूज करोगे, ओके, उस केस में आपको एक महीने के लिए 13,300 रुपीज मिलेंगे. अब वो आपके बैंक में नहीं मिलेंगे, राइट? दैट यू विल गेट इन द माइक्रोसॉफ्ट वॉलेट. ठीक है, सो दैट आप एज्योर की सर्विसेज को यूज कर सको, राइट? एंड वंस you are exhausted with this account, this amount, so in that case we can again raise a ticket with the Microsoft team in order to get the discount for another 1 month. But वो होगा नहीं, जरूरी नहीं होगा, right? We will be able to cover this module within 1 month itself. ठीक है, बट स्टिल अगर आपको लर्निंग के लिए आगे करना है और यू डोंट वांट टू गो फॉर पे एज यू गो, ठीक है, आप कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना चाहते, इन दैट केस आई विल हेल्प यू आउट विद वन प्रोसेस. थ्रू दैट यू विल बी एबल टू यूज Azure services for another 1 month. नहीं तो you will be able to use this much amount only for 1 month only. ठीक है, so here you have to provide the information. I already have a pay as you go account, so for me I'm not going to provide my card details here, but for you, you have to go through with this, and then you will be able to sign up, right? And once you will be able to sign up, you will be able to log in onto portal.azure.com.
So this is the console of Azure, through which you will be able to use any service which is provided by the Microsoft Azure. Right? In my case, I am using pay as you go service, right? But if you are going to sign up, in that case, it will be a free trial account for you. And in that case, you will get the 13,000 something amount into your wallet, and that amount can be used in creating your resources. कोई भी रिसोर्सेज आपको बनाना है, VMs बनाने हैं, आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना है, आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, आपको राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी करना है, आपको ऑन प्रिम एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक करवाना है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से, right? So all these things will be needing the amount, right? And that amount you will get in the wallet once you will sign up with your credit or debit card. For me, it is not applicable as I'm already using the pay as you go service. तो pay as you go service क्या कहता है कि जितना सर्विस आप यूज करोगे, right, only that amount you have to pay. और क्या होता है, हर मंथ आपका जो बिलिंग साइकिल होता है, पर मंथ यू विल बी एबल टू गेट द बिल. एक महीने सर्विस यूज कर ली, आपका एक बिलिंग साइकिल डिसाइड हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दैट बिलिंग साइकिल यू हैव टू पे टू द माइक्रोसॉफ्ट. तो कंपनीज जो है, कंपनीज के केस में, कंपनीज आर नॉट यूजिंग फ्री ट्रायल अकाउंट एंड ऑल, राइट? दे यूज टू कॉन्फ़िगर द पे एज यू गो सर्विस, so that what and all service they are using, for that service only they have to pay to the Microsoft. First thing, right? So this is the mandatory process. This is the first process that we have to go through with, right? Until or unless you will not create the account, you will not be able to use the services. Okay. Now, so all these services we will talk about later on, right? I have prepared the modules. We have around 9 modules for this Azure 104 in Azure 104 we were going to discuss on 9 modules, and that are related to virtual machines, then networking, then active directory, right? Multiple things are there with which we are going to discuss. Let me show you. So let's suppose this one is module 1, under which we are going to discuss about, so first of all, introduction to cloud computing, what is Microsoft Azure, what and all services are provided by the Microsoft Azure, Azure portal, Azure CLI, Azure PowerShell, right? So Azure portal is basically that we are seeing now. ये जो आपकी screen पे available है, that is the Azure portal. ठीक है? The same thing you can access with PowerShell also and your CLI also. ठीक है? Once you will grow in your career, जैसे आप DevOps में जाओगे, right? Over there you are going to learn about the commands and all, right? So in that case, you can use the CLI or PowerShell to connect your Azure account, to connect your Azure portal. वहां पे सारा काम फिर होगा कमांड्स के थ्रू. यहाँ पे आप सारा ग्राफिकल कर रहे हो, राइट? ओवर देयर आपको सारा काम करना होगा कमांड्स के थ्रू. ठीक है? Then these are the services. Like, let me show you what and all services are there. Infrastructure as a service, platform as a service, and then software as a service. Okay. Yeah. So these are the major services that are provided by the Microsoft, which is compute, networking, storage, and database. Compute services क्या है? जिसमें आप virtual machines बना सकते हो, सर्वर्स बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर बना सकते हो, लिनक्स सर्वर्स बना सकते हो, विंडोज मशीन्स बना सकते हो, विंडोज 10, विंडोज 11, राइट? एंड नेटवर्किंग,
नेटवर्किंग इज बेसिकली, लेट्स सपोज आपका जो अकाउंट है, राइट, दैट इज अवेलेबल इन डिफरेंट जोन, राइट, एंड यू वांट टू कम्युनिकेट दैट जोन विद योर, जैसे आप राउटिंग करते हो ऑन प्रिम के केस में, है ना, आप करते हो कि आपके दो ऑफिस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं दैट आर रनिंग विद डिफरेंट सीरीज ऑफ आईपी, है ना। सो सेम थिंग यू कैन डू इट ऑन एज्योर ऑल्सो, कि लेट्स सपोज आपकी दो अलग अलग जगह पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है एंड यू वांट टू create the communication between them. In that case we will be using networking. सेम यहाँ पे सिक्योरिटी भी आ जाता है, यहाँ पर फिर आ जाएगा फायरवॉल्स भी आ जाएगा आपका। ओके, देन स्टोरेज, यहाँ पे एक डेडिकेटेड सर्विस है स्टोरेज के लिए, राइट। ऑन प्रिम के केस में आप क्या यूज करते हो, सैन कॉन्फ़िगर कर लेते हो, नास कॉन्फ़िगर कर लेते हो, राइट। बट इन केस ऑफ Azure there is a different service available called storage, under which either you can create your file share। अच्छा, मैं इतना तो assume कर सकता हूं that you have the basic knowledge of servers and all, yes or no, क्योंकि पता लगे मैं बोल रहा हूं और ऊपर से जा रहा है चीजें आपकी। नहीं, यस Okay, Yes. I can assume, right? यस Yes, sir. Okay, okay, wherever you have confusion just do let me know। ओके, स्टोरेज, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं डेडिकेटेड स्टोरेज अकाउंट बना सकता हूँ अंडर विच आई कैन क्रिएट द फाइल शेयर्स। जैसे आप फाइल शेयर अपने ऑन प्रिम सर्वर्स पे बनाते हो और वहां पर फिर अभी सभी यूजर्स को आप उसका एक्सेस दे देते हो, राइट। तो सेम वे अब वहां पर मुझे सब कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट गो टू डायरेक्टली टू द स्टोरेज सर्विस एंड वहां पर मैं अपना configuration file server का, या फिर you can say it as for blob storage, there are different storage types that we are going to discuss further in the further classes, okay, but for now we are going to just, I am going to give you an overview, okay। Let's suppose it is blob storage, table storage, right, then file shares. So for if I want to create these and all things, so I have to create first of all the storage account. Under that storage account, I will be able to use the storage services. And storage services can be table storage, file storage, and then your this one, blob storage. Okay, then we have the database service also. आप पहले क्या करते थे, SQL सर्वर बिल्ड करते थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पे अलग से डेटाबेस के लिए सर्विस अवेलेबल है। No need to configure a SQL server in the environment, right? Directly आप डेटाबेस सर्विस पे जाओगे एंड यू विल क्रिएट योर डेटाबेस, और आप उसको अपनी एप्लीकेशन से फेच करवा दोगे। आपकी एप्लीकेशन जो भी डेटा स्टोर करेगी डायरेक्टली वो आपके डेटाबेस में स्टोर कर देगी, राइट। So then we have the virtual machines, function application, app services, Kubernetes services, okay। And what is the compute service, you can see if you need to create the virtual machine, in that case you have to go with the compute, and over there you will be able to create your virtual machines. But I'm not going to cover this topic today, right? We are going to have a dedicated class for it. This is just an overview session, okay? Now let me show you the module 2. Okay, so under module 2 we are going to cover Azure subscription and resource groups, Azure resources manager, managing Azure resources, Azure tags, introduction to Microsoft Azure storage. So this is what I was talking about, that what is Microsoft Azure storage is, and then type of storage accounts. So यहाँ पे भी बहुत type के storage accounts create होते हैं, ठीक है? Then storage replication options, Azure blob storage, Azure CDN, Azure file storage, and Azure file synchronization.
File sync in let's suppose you want to do synchronization with your on-prem and your this one and your Azure infrastructure. ठीक है, तो let's suppose एक on-prem server है, वहां पे आपका data store हो रहा है, but you want to sync that data with the Azure infrastructure also, right? So in that case we have to configure the Azure file synchronization. Okay, and जो भी ये topics है, right? So first of all we will understand it graphically, उसके बाद इसका concept समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको practically perform करेंगे. ठीक है, graphically in the sense, so we are going to draw the diagram. ठीक है, ये मेरी प्रीवियस बैच का एक डायग्राम था जो मैंने भी क्रिएट किया था अभी लास्ट क्लास में भी. सो same way we are going to create the diagrams. We will understand how the flow will be there, right? Once we will be able to understand it graphically, obviously फिर हम उसको practically तो implement कर ही लेंगे. तो concept समझना जरूरी है. मेरा जो फोकस रहेगा वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में रहेगा. प्रैक्टिकल्स होता रहेगा. प्रैक्टिकल इज नॉट अ बिग डील, राइट? मेरे पास एक पूरी बुक है, वहां पे स्क्रीनशॉट के साथ पूरे प्रैक्टिकल डिफाइंड है. ठीक है, जो जो प्रोसेस आपको करना है उस बुक में पूरा डिफाइंड है, तो उसको भी फॉलो करोगे तब भी आप यू विल बी एबल टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल. बट द थिंग इज कंसेप्ट, क्योंकि इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा इंटरव्यूअर. ही विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, आपको बेसिक्स कितने क्लियर है. एंड सी गाइस, 104 इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन फॉर अस. ठीक है, अब ऑब्वियसली 104 पे तो हमें नहीं रुकना है, हमें आगे करियर में ग्रो करना है, राइट? सो इन दैट केस 104 में जितने आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फर्दर आप अपनी एक्सपर्टीज में और आगे जा सकते हो. आइदर यू कैन बी अ आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और यू कैन बी अ डेवऑप्स इंजीनियर. मैं अभी रोड मैप दिखाता हूं फॉर अ 104 इंजीनियर. आप आगे फर्दर और क्या चूज कर सकते हो. बट फर्स्ट वी हैव टू क्लियर द कंसेप्ट. फर्स्ट वी हैव टू गेट लाइक अराउंड, आपको 2-3 साल आप अच्छे से काम करो Azure पे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन यू कैन गो फॉर द फर्दर प्रोफाइल्स. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज द मॉड्यूल 2, राइट? एंड देन मॉड्यूल 3. So this is the storage, right? What is Azure table storage, Azure storage queue, Azure storage explorer, Azure shared access signature. ठीक है, अभी के लिए शायद आपको ये चीजें समझ ना आ रही हूँ, right? But don't worry, I will explain each and everything. So for now you have to just understand that what and all topics we are going to cover. ठीक है, this is module 3 and module 4 is going to be for the compute services, जहां पर हम virtual machines के बारे में पढ़ेंगे, virtual machines की categories के बारे में पढ़ेंगे, right? Scale sets के बारे में पढ़ेंगे. Right? You can see what is a virtual machine, what is Azure virtual machine, configuration of Azure VM, data disk कैसे connect करते हैं, right? And then Azure VMs and network interface. You can attach multiple network interface card to your Azure VM depending upon the need. ठीक है, जैसे अगर आप हार्डवेयर सर्वर की बात कर रहे हो, है ना, तो हार्डवेयर सर्वर पे कितने सारे NIC कार्ड्स होते हैं? 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपने कस्टमाइज करा रखा है अपना हार्डवेयर. सो इन दैट केस यू कैन गेट 10 नेटवर्क कार्ड्स आल्सो. सो सेम इन केस ऑफ Azure as well. If you are going to create any of the VM over there, you can connect as many network cards as you want. ठीक है, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट इन Azure. ऑटोमेट कैसे? जैसे आप ये यूज करते हो, टेराफॉर्म यूज करते हो. टेराफॉर्म यूज करके क्या होता है? यू हैव टू जस्ट राइट अ कोड. आपने कोड राइट किया एंड बैकग्राउंड में जाके आपका मशीन बिल्ड हो जाता है, VM बिल्ड हो जाता है, राइट? सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. देन VHD टेम्पलेट्स, ARM टेम्पलेट्स, कस्टम VM इमेजेस. जैसे आप WDS पे काम करा है आपने ऑन प्रिम पे, राइट? WDS में आप कैप्चर करते हो sysprep. किसी को पता है व्हाट इज sysprep एंड व्हाट इज कैप्चर इमेज इन केस ऑफ WDS?
विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ सर। राइट, तो कैप्चर में क्या होता है? कैप्चर में होता है कि जो भी मतलब आपका जैसे जो भी ओएस आपका है वो हमें पूरा नहीं नहीं, सॉरी, यू आर नॉट क्लियर टू मी, कैन यू प्लीज कम अगेन? मींस ना थोरली पता नहीं है, बाकी डब्ल्यूडीएस के बारे में पता है। ओके, कैप्चर के बारे में नहीं पता। एनीवेज, सो हरप्रीत, कैन यू एक्सप्लेन? चलो कोई बात नहीं। तो क्या होता है डब्ल्यूडीएस कैप्चर में? देखो, अब आप जो भी अपने आपके कंपनी में लैपटॉप आता है, राइट, आप उसमें विंडोज इंस्टॉल करते हो। तो विंडोज इंस्टॉल आप या तो आप वहां पे डीवीडी नहीं डालते हो, ना ही आप वहां पर पेन ड्राइव से लैपटॉप को बूट करते हो, राइट। आप नेटवर्क से लैपटॉप को बूट करते हो। एंड इन ऑर्डर टू बूट दैट लैपटॉप थ्रू नेटवर्क, यू हैव टू कॉन्फ़िगर डब्ल्यूडीएस। ठीक है, तो डब्ल्यूडीएस से क्या होगा, नॉर्मल इमेज इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा। बट लेट्स सपोज आपकी कंपनी के कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं। लेट्स सपोज क्रोम हो गया, एडोब रीडर हो गया, राइट, ऑफिस हो गया, ऑफिस 365 हो गया, राइट। सो यू वांट टू इंस्टॉल इट onto each and every system of your office, of your company। तो अब आप मैनुअली तो जाओगे नहीं, और 20,000 सिस्टम हो सकते हैं, 50,000 सिस्टम हो सकते हैं, तो क्या आप मैनुअली जा जाके हर एक सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे? नो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ कैप्चर इमेज। सो दैट एक कैप्चर इमेज में आपको क्या करना है, बस आपको अपने बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देने हैं। उसके बाद आपको उस करंट इमेज को कैप्चर करके अपने WDS में अपलोड कर देना है। उसके बाद जब भी उस इमेज से आपका लैपटॉप बूट होगा, चाहे वो कितने भी लैपटॉप्स हो, राइट, दैट विल बी इंस्टॉल्ड विद द बेसिक सॉफ्टवेयर्स। सो सेम इन केस ऑफ कस्टम VM images in the Azure। लेट्स सपोज Azure में आपने एक VM क्रिएट किया, और उस VM में आपने कुछ सर्विसेज इंस्टॉल कर रखी हैं, आपने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, राइट, और आपको वैसी ही 100 मशीन्स और चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन का, सेम इंस्टॉलेशन का, 100 VMs आपको और चाहिए। तो क्या आप फिर से उसमें अलग अलग जाओगे और अलग अलग से इंस्टॉलेशन करोगे? राइट, सो टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस यू कैन यूज कस्टम VM images। Then we have the option of Azure VM scale sets also। अब स्केल सेट क्या कहता है? लेट्स सपोज मैं एक अपनी VM रन कर रहा हूं, मेरी VM पे एप्लीकेशन रन हो रही है कोई, ठीक है, और उस एप्लीकेशन को नंबर ऑफ यूजर्स आर हिटिंग। तो अगर नंबर ऑफ यूजर हिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितना उसका कंप्यूटेशन पावर होगा, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द मशीन कैन रिस्पॉन्ड, राइट। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यूजर उसको हिट करते जाएंगे, तो मेरी मशीन का कंप्यूटेशन पावर बढ़ेगा, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, राइट। और एक टाइम पे क्या होगा, मेरी मशीन डाउन हो जाएगी। डाउन इन द सेंस माय वेबसाइट विल गेट डाउन, माय यूजर्स विल नॉट बी एबल टू रीच टू माय वेबसाइट, राइट। तो अब स्केल सेट क्या कहता है, दैट आई हैव टू डिफाइन अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू। लेट्स सपोज मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर दिया कि भाई जब भी मेरे सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन 70% हो रहा है, it will create one more virtual machine automatically। सेम, अगर दो मशीन भी लोड शेयर नहीं कर पा रही, दूसरे मशीन के साथ भी जब मैंने वो बिल्ड हुआ, अगेन द लोड इज, अगेन द CPU यूटिलाइजेशन इज 70%, so it will create one more। it will create, जब तक मैं, जितना मैंने उसका नंबर डिफाइन कर रखा होगा, लेट्स सपोज मैंने 10 मशीन डिफाइन कर दी, so till 10 machine it is going to create, it is going to keep creating the VM, राइट। और जैसे ही यूटिलाइजेशन कम होगा, ठीक है, अब एक पर्टिकुलर टाइम पे यूजर्स आएंगे ना मेरी वेबसाइट पे, जरूरी तो नहीं है कि 2400 घंटे वो मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं,
राइट। तो जैसे ही मेरा लोड कम होगा, जैसे ही मेरा यूटिलाइजेशन कम होने लगेगा सीपीयू का, तो फिर से वो अपने पहले वाली स्टेट में वापस आ जाएगा, और जो वीएम क्रिएट हुई होंगी, right, that VMs will be auto deleted. No need to do manual thing in this case. तो ये बोलता है मेरा Azure VM scale set. ठीक है, तो ये ऑटो स्केलिंग है, राइट? exactly. और ये एक टर्म होता है, आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट टर्म। जैसे जीमेल में फॉल्स मतलब हम लोग रिसोर्सेज दे देते हैं कि 1 TB हर यूजर को मिला हुआ है, बट वो कुछ जीबी ही रहता है, और एज पर यूसेज वो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। दैट इज द थिंग। Sorry, I'm not able to get you what actually you're talking about. जैसे एक टर्म होता है, जैसे हमें जीमेल में मिलता है कि OneDrive you're talking about? इन गूगल, Yeah, in Google it is Google Drive. Yeah. गूगल ड्राइव। तो वी गेट द डिफॉल्ट 500 GB ऑफ मेमोरी फ्रॉम गूगल, बट वो इन रियल हमें एलोकेटेड नहीं होता है। Okay, so that is the concept of Office 365 or GCP. That is not included here. उसमें क्या होता है ना, whenever you are procuring the license for the Office 365, right, you used to get 1 TB of storage depending upon the license. In my organization we are getting 1 TB. ठीक है, now I can decide as a system admin, I can decide that how much storage my user will be able to use. तो वो concept 365 का है. Right, so that is not with Azure. No, that is with Office 365. Okay. Yeah. Okay, so this is going to be our module 4. अब थोड़ा सा fast करते हैं, right? Module 5. I'm not going to explain the topic. So once we will start our classes, I'm going to explain it one by one. Okay. So the fifth will be related to network, right? अब यहाँ पे एड्रेस स्पेसेस, जैसे आप अपने डीएससीपी में स्कोप बनाते हो, राइट? तो जिस स्कोप में से आईपी असाइन होता है आपकी क्लाइंट मशीन को, सेम वे यू कैन क्रिएट एड्रेस स्पेसेस हियर. एड्रेस स्पेस बनाओगे, डिफाइन करोगे, आइदर यू वांट टू यूज बाय डिफॉल्ट. अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एज्योर क्लास ए नेटवर्क यूज करता है, राइट? एंड उसमें भी सबनेटिंग हो रखा होता है. ओके, but you don't want to use class A, you want to use class B or class C. In that case we can define our own address space. और अगर उस address space में भी आपको subnetting करना है, so that is also possible, that also we can do. ठीक है, then I was talking about this different VNets. Let's suppose आपके जो machines हैं, VMs हैं, वो different network में है, तो by default different network में तो वो communicate नहीं कर पाएंगी. ये तो हमने अपने ऑन प्रेमिस में देखा ही है, ऑन प्रेमिसेस में. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक द communication between the machines which are on the different virtual networks, in that case we have to do the VNet peering, right? Then our machines which are available under VNet 1 will be able to communicate with the machine which are available under VNet 2. ठीक है, इसी में फिर आपके पास राउटिंग का कंसेप्ट आ जाता है, राइट? देन आपके पास राउट टेबल्स आ जाते हैं, डीएनएस आ जाता है. अब यहाँ पर क्या है, एज्योर डीएनएस अलग से सर्विस अवेलेबल है. ठीक है, देन क्रिएट एंड अटैच एनआईसी टू अ वीएम. ओके, then DNS zones, security rules and then network security groups, NSG. अब आप चाहते हो कि आपकी मशीन को, लेट्स सपोज आपने एक VM बनाया, राइट, एंड यू वांट only with a particular IP the user will be able to connect the machine. मतलब आपने एक IP डिफाइन कर दिया कि भाई जब इस IP से आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आपकी VM के पास रिक्वेस्ट आएगी, Azure की VM के पास रिक्वेस्ट आएगी, then only the user will be able to connect. नहीं तो यूजर, कोई भी यूजर हो, कनेक्ट नहीं कर पाएगा.
right? So over there we can define the rule, we can define a particular IP or multiple IPs also, एक single नहीं बहुत सारी भी assign कर सकते हैं, right? So that is called under the network security groups we can define it. This is the NSG, network security group. यहाँ पर और भी options आते हैं, so I'll let you know one by one. ऐसे easily recall करना मेरे लिए भी easy नहीं है, because I will be able to see it graphically that what and all options we are getting over there. ठीक है? Okay, now the next one will be advanced networking, I believe, under which we are going to talk about firewalls. Yes, load balancers. ठीक है, अब आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हो कि लोड बैलेंस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो फॉर योर वेबसाइट, है ना? इन दैट केस वी कैन कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसर. पहले ऑन प्रेमिसेस में आप क्या करते थे, आप NLB कॉन्फ़िगर करते थे, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्लस्टर बनाते थे आप, और उस क्लस्टर में फिजिकल सर्वर्स को ऐड कर देते थे, है ना? और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसर डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एंड यू कैन ऐड योर वर्चुअल मशीन इन द बैकग्राउंड, एंड Azure लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो भी वर्चुअल मशीन अवेलेबल होगी, राइट, उसके पास आपकी यूजर की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा. या फिर अगर एक मशीन ऑलरेडी सर्व कर रही है बहुत सारे यूजर्स को, इन दैट केस लोड बैलेंसर को लगेगा कि that this machine is already busy, राइट? तो LB क्या करेगा, लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को, यूजर की रिक्वेस्ट को सेकेंड मशीन के पास भेज देगा. ऐसे ही सो ऑन जितनी भी मशीन्स होंगी लोड बैलेंसर के साथ कॉन्फ़िगर्ड, वो वन बाय वन उनके पास रिक्वेस्ट भेजता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द लोड. ओके, फिर यहाँ पे गेटवेज का कंसेप्ट आता है. लोड बैलेंसर बहुत टाइप के लोड बैलेंसर्स हैं, दैट इज पब्लिक, इंटरनल, ठीक है, सो दैट वी विल डिस्कस. ओके, एंड देन अच्छा, कुछ लिमिटेशन है हमारे पास जो हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. दिस विल बी these topics, express route, ठीक है, and these are the, but I will help you with the concept, why these concepts are being used, why these terms are being used in the Azure, but we will not be able to implement it practically. ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे ISP का हेल्प चाहिए होगा. ये बेसिकली किस लिए है, अगर आपको अपने ऑन प्रेम इंफ्रा को मूव करवाना है Azure पे, ठीक है, ऑलरेडी रनिंग कुछ सर्वर्स हैं आपके, आपको लिफ्ट एंड शिफ्ट करना है, राइट? ये भी एक टर्म है दैट इज यूज्ड इन द क्लाउड, लिफ्ट एंड शिफ्ट, राइट? तो उस केस में क्या होगा, मुझे ISP की जरूरत पड़ेगी, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेशन है. वी विल नॉट बी एबल टू डू ओनली दिस टॉपिक प्रैक्टिकली, अदर देन दैट 99% वी विल बी एबल टू डू. ठीक है, नाउ द सेवेंथ वन, so seventh one is related to your Active Directory and your RBAC, role based access services. ठीक है, अब ठीक है, आप एक एडमिन हो, राइट? आपके पास पूरा कंसोल का एक्सेस है, बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर टाइम अवेलेबल हो. ठीक है, तो आपको एटलीस्ट आपकी एब्सेंस में किसी को तो राइट्स देने पड़ेंगे ना. सो आइदर यू कैन गिव द राइट्स इक्विवेलेंट टू यू, तो जो भी आपको एक्सेस होगा सेम एक्सेस आप किसी दूसरे यूजर को भी दे सकते हो, राइट? नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे हम लोग AD में करते थे ना, एक्टिव डायरेक्टरी में वी यूज्ड टू कॉन्फ़िगर दैट वन, डेलीगेट राइट्स करते थे हम लोग वहां पे. तो जो भी हम राइट्स प्रोवाइड करते थे, अकॉर्डिंग टू दैट राइट्स ओनली यूजर वाज एबल टू परफॉर्म द थिंग्स इनटू आवर एक्टिव डायरेक्टरी. सो सेम थिंग यहाँ पर भी है. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं ऑन प्रेम सर्वर्स के, राइट, तो आपके लिए बहुत इजी है ये कंसेप्ट समझना, बहुत इजी है, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, जो आप काम आपने देखा है आप उससे उसको रिलेट कर पाओगे, है ना? Now, so in this case we are going to connect our
ऑन प्रिम एक्टिव डायरेक्टरी। अच्छा, ऑन प्रिम एडी को हम एज्योर एडी से जरूर सिंक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑन प्रिम रनिंग डोमेन कंट्रोलर है, उसके अंदर जितने भी यूजर्स हैं, right, that we can sync with the active directory, Azure active directory, that is possible, right? बस वो एक practical का limitation है, apart from that everything we will be able to perform. Okay, now अच्छा, एक मॉड्यूल जो है that includes the Kubernetes and app services, and the last one will be the monitoring, right? Monitoring and alert, right? And then recovery also, backups of your virtual machines, recovery of your virtual machines, alerts and actions, ठीक है। आप चाहते हो कोई अलर्ट कॉन्फ़िगर करना कि आपकी हार्ड डिस्क 90% यूज हो चुकी है, मतलब लेट्स सपोज आपने 1 TB का हार्ड डिस्क लिया हुआ है एंड इट इज रीच टू 950 GB, ठीक है। तो आप एक अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई जब भी 950 GB रीच हो जाए आपकी हार्ड डिस्क, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक अलर्ट आ जाए and you have to take the appropriate action for that particular alert, right? And then how we will be able to recover the virtual machines and the storage accounts and all these things? For that we have to configure the recovery services vault, okay? And this is the mandatory thing. Once you have to configure the services vault, then only you will be able to take the backup and you will be able to restore your virtual machine at any point of time. आप scheduling भी लगा सकते हो कि हर रोज 10 बजे आपका बैकअप कॉन्फ़िगर हो जाए, okay? So this is going to be the topics, right, that we are going to cover under this. And I would recommend you all to just create one Azure account before we start our classes, so that whenever we are doing the practicals, you can do that practicals along with me. And if you are facing any kind of issue, you can just do let me know. I'll definitely try to help you out with the configuration, right? And after this, I'll be helping you out with the Azure book, PDF book, right? And then the PPTs also, but all these modules are that you will get into your portal, okay? And you will get the interview questions also related to Azure, but and all interview questions can be asked. So that also I'm going to share with you all. And yeah, that's it for today. And yeah, last one. Let me help you out with the roadmap. What you need to do after, if you are opting for 104, what should be your next path? Just a second. Yeah. Okay, so this is the Azure certification path 2023. See, these are the fundamental things. देखो आप कहाँ जा सकते हो. If you're doing Azure fundamentals 900, then you can opt for 104. This is totally, it is not recommended, this is not mandatory, this is totally optional. इसमें क्या होगा, 900 में बेसिकली आपको कंसोल का नॉलेज मिलेगा. कंसोल पे काम कैसे हो रहा है वो काम हम वो सीखेंगे हम 104 पे, राइट? बट बेसिक टर्म्स जो है Azure 104 Azure की, राइट, दैट यू विल गेट टू नो अंडर AZ 900, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज टोटली ऑप्शनल. मैं इसका भी आपको डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा अगर आप help you out with the documentation of 900 also. I have the handwritten notes. ठीक है? Now the second one is Azure data fundamentals. So जिसको डेटा में जाना है, डेटा फैक्ट्री आपने सुना होगा, Azure data factory, right? Then they have to go through with this. If anyone wants to go to the artificial intelligence,
तब आपके लिए ये फंडामेंटल कोर्स होगा, right? But let's forget about this. We are following this path. We are working on, we will run first of all Azure104, AZ104, and then after learning AZ104, either you can go for 305 solution architect expert, जो बेसिकली क्या करता है, सॉल्यूशन डिजाइन करके देता है. लेट्स सपोज मेरे क्लाइंट की एक क्वेरी है कि भाई मेरे को एक एप्लीकेशन रन करनी है, right? So what and all things will be needed if I need to host that application? तो वो काम होगा आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का. वो पूरा डिजाइन उस एप्लीकेशन के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है, कैसे डेटा फ्लो होगा, कैसे स्टोरेज अकाउंट बनेगा, कैसे डेटाबेस बनेगा, एवरीथिंग वो ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में बना के देगा. और एक्सपर्टी तभी आती है जब आपको 104 का अच्छा नॉलेज है, जब आपने पूरा काम किया हुआ है, आपने सर्विसेज पे काम किया हुआ है अच्छे से, राइट? एंड आफ्टर डूइंग दिस यू कैन गो फॉर डेवऑप्स. इसके बाद तो आई थिंक अभी कुछ अवेलेबल नहीं है क्लाउड में, राइट? डेवऑप्स इज द मेजर थिंग. और यहाँ पर सैलरी पैकेज भी इज लाइक यू कैन नॉट एज्यूम इवन. ठीक है. देन अगर आप डेटा फंडामेंटल्स में जाते हो, ठीक है, उसके बाद यू कैन गो फॉर एज्योर डेवलपर एसोसिएट, और यू कैन गो फॉर एज्योर सिक्योरिटी. अच्छा, एज्योर सिक्योरिटी इंजीनियर एसोसिएट तो आप यहां से भी जा सकते हो अगर आपने 104 किया है, राइट? देन यू कैन गो फॉर एज्योर 500 ऑल्सो. मैं let me tell you as per my experience what I would recommend you. See, 104 से आपके बेसिक क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको सर्विसेज का पता लगेगा, ठीक है? उसके बाद में आप अपनी मास्टरी डिफाइन करो, आपको कहां जाना है. आपको सिक्योरिटी लेवल पे जाना है, ठीक है, या फिर आपको नेटवर्क लेवल. एक और एग्जाम होगा यहाँ पे, दैट इज Azure 700, दिस वन, राइट? यहां से आप डिफाइन करो. सी, either you can after 104 you can go directly to the solution architect, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नहीं तो और एक्सप्लोर करना है खुद को और इवन एज्योर की सर्विसेज को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेवलपर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और हमें डेटा इंजीनियर के लिए सोचने की जरूरत नहीं है. बट जहां जो बेसिकली वो होते हैं ना आपके एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डीबीएस होते हैं, उनको यहाँ पर जाने की जरूरत है, राइट? एज अ सिस्टम एडमिन हमारे लिए क्या जरूरत है, 104 किया, आफ्टर दैट यू कैन ट्राई योर हैंड ऑन सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है, और यू कैन गो ऑन नेटवर्किंग ऑल्सो, दैट इज 700, राइट? उसके बाद you can go for 305 and you can go for 400. 400 में थोड़ा सा क्या है आपका, थोड़ा सा आपको कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है. कोडिंग में ये नहीं बोल रहा कि आपको एप्लीकेशन डिजाइन करना है, नो. मैं ये बोल रहा हूँ आपको डेवऑप्स के टूल्स सीखने हैं. टूल्स जैसे टेराफॉर्म हो गया, देन आपका क्यूबरनेटिस हो गया, राइट? एनसिबल हो गया, डॉकर्स हो गया, राइट? बट ये आता है जब आपको 5-6 साल का प्रॉपर अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू शुड गो फॉर डेवऑप्स. क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम पे आप इतना नहीं, आपको ग्रो भी करना है अपने करियर में. इन दैट केस आपको अपना सैलरी भी इंक्रीमेंट करना है. सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर डेवऑप्स. Side by side, even I am learning DevOps also. I am learning the tools that are being used in DevOps, Terraform and all. Okay. So first we will clear our concept. Then we will decide where we want to go. Either we can go for the security. यहाँ पर आपको security का concept भी समझा दूंगा मैं, network का concept भी समझा दूंगा proper. ठीक है. उसके बाद आपको अपनी mastery define करनी है, आपको mastery कहाँ करनी है, ठीक है? You can decide either 500, you can decide or 700, and after doing this you can decide for 305, and then the last one will be the
DevOps. DevOps क्या है ना, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है, इन सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना दिया, दैट इज DevOps. तो इसीलिए ये थोड़ा हाईली पेड भी है, राइट? अगर आप DevOps इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको कंपनसेशन भी अच्छा मिलता है. Okay, now any confusion, we are open for the query. All clear? Yes, sir. Others, please confirm so that we can wrap up. Yes. Okay. So I think by tomorrow we are going to have the classes from 10 p.m. to 12, right? And we are going to start with the module 1, right? And try to create your account. If you are not able to create it, do let me know before the class. I will help you out with the account creation, and then we will move further. Sounds good? Yes, sir. Yeah. Okay, then see you tomorrow. Bye-bye, everyone. Good night. Take care. Thank you, sir. Bye-bye. Bye.